Coming in from Bengal, TMC MLA Manik Bhattacharya, who was arrested by the Enforcement Directorate in the school teachers job scam, was taken to the court, but BJP workers gathered outside the court showed slippers and hurled Chor-Chor jibe at Manik Bhattacharya. Even as he was being whisked inside the court by the ED officials. Let's try and boost the nats up on these pictures so that you get a sense of what I'm talking about. Trinamool Congress MLA Manik Bhattacharya, as he was brought to the court just a short while back, there was a scene that unfolded inside the court premises. BJP workers who were there inside the court compound for a pending matter, as soon as they saw Manik Bhattacharya, they all erupted in protest and anger, all showing slippers and all. And there you see these BJP workers have been literally waving slippers at the hands towards Manik Bhattacharya, the Trinamool Congress MLA. These slippers were shown, and the slogans were hurled at Manik Bhattacharya as he was taken inside the courtroom. The BJP workers with slippers in their hands are trying to demonstrate a protest as Manik Bhattacharya was brought into the court. Manik Bhattacharya had walked inside because the regular sessions court is on leave, and that's why it is a special court where the procedural production would happen. And as Manik Bhattacharya was brought in from that side, he came walking down, and all these BJP workers who had assembled here, they were almost on a standby. The moment they saw Manik Bhattacharya, they all erupted in sloganeering and of course started hurling the slogan, their new slogan, that is Chor-Chor, Trinamool shop chor, which means thieves, thieves. All in Trinamool Congress are thieves. So chaos really outside the court premises. Manik Bhattacharya there, the TMC MLA, arrested by the ED. Remember, this arrest happened despite the Supreme Court actually granting him relief, but the court had only talked about the CBI crackdown. This was the ED, which is also investigating the money laundering aspect of the case, arresting finally in a midnight operation. Tamal is now joining us for more on this. Tamal, BJP workers gathered in large numbers, shouted slogans also called Manik Bhattacharya Chor. Well, that's right. As Manik Bhattacharya was brought to the court compound, he was initially supposed to be produced before the session court, but because the regular session court is on leave, he was brought to the special court and he was actually walked down. So when he was brought inside the court premises, the BJP workers, seeing him, all erupted in protest. They literally booed him, raised slogans, calling him names. They also waved their slippers, something that you have seen in the past as well. We can hear you. Go ahead. I think we've lost that line. The reactions coming in from the BJP. The BJP is saying that Mamta must break her silence. There are normal people, common man of West Bengal. They are giving these slogans that TMC ka sabai chor. Now you see, when a public representative, he's an MLA, he was removed from the post by the Honorable Court. And now there are evidences of his link with this entire trail and money link. Everything has been found. That is the reason that he has been caught today. Now the Chief Minister should take a stand. She should suspend him from the party. If not, then we will completely understand that there is something more to hide. That is the reason people like this were part of TMC. That was Priyanka Tibrewal. We are now joined by Dilip Ghosh of the BJP. Mr. Ghosh, thank you for speaking to Times Now. What do you make of this, sir? Because your party has demanded that this man should be sacked from the TMC and Mamta must break her silence.
देखिए, काफी दिन से इनकी इंतजार थे। वो बचते रहे तरह तरह के, कभी कोर्ट के माध्यम से, कभी छुप करके सीबीआई का हाथ से बचते रहे और उनके सामने भी नहीं आए, पूछताछ में भाग नहीं लिए। अब उनको मालूम था कि ये हर्ष होने वाला है। आज वो समय आया है जो बंगाल के लोग चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी जो घोटाला हुई है उसमें जो लोग लिप्त हैं उनको सजा मिले। और ऐसे सारे लोग जो पहले ऑफिसर थे, बाद में टीएमसी में शामिल हुए, टिकट मिला और फिर एमएलए बनकर आ गए हैं। वैसे बहुत सारे लोग पार्टी में हैं टीएमसी में जो इस सारे घोटाले में लिप्त हैं। इतनी बड़ी घोटाला, इतना बड़ा, बंगाल के लोगों को शर्मिंदा करने वाला जो घटना हुआ है उससे बंगाल निजात जाना चाहता है। जो कोर्ट के आदेश से ये इंक्वायरी हो रही है और एक के एक जेल में जा रहे हैं। मुझे लगता है इनसे पूछताछ के बाद और भी सारे लोग इसके घेरे में आएंगे और सच्चाई सामने आएगा। दिलीप घोष जी, आप सच्चाई की बात कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी तो कह रही है कि एक तरह से विच हंट है, वेंडेटा है टीएमसी का नाम बदनाम करने के लिए। देखिए, टीएमसी बीजेपी तो बाद में, जो घटना हुई है हजारों लोग इसमें प्रताड़ित हुए हैं, जिनकी पैसा लूटा गया है, वो लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने सीबीआई की इंक्वायरी का आदेश दी। उसमें पार्टी कहां से, बीजेपी और टीएमसी कहां से आ गया है? अगर कोर्ट पर भरोसा नहीं है और जो कोर्ट आदेश देते हैं सीबीआई को, उस पर भी भरोसा नहीं है, फिर लोकतंत्र का अंदर ये राजनीति क्यों करना है इनको? दिलीप घोष जी हमारे साथ बने रहिए। मनोजित मंडल टीएमसी से हैं, हमारे साथ जुड़ गए। मिस्टर मंडल, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? द बीजेपी सेज दैट Manik Bhattacharya has now been arrested, but Mamata Banerjee needs to answer. She must answer the people of Bengal. Then what Vijay Mallya did, Mr. Modi should also answer. ये दिलीप साहब को तो बोलना चाहिए ना, जो बैंक उठ के चले गए 25,000 करोड़ रुपया मोदी जी के नाक के नीचे से, तो लोग मोदी जी को आंसर पहले करने के लिए कहो ना. This is the same logic. Mr. Modi should answer. Look, we are very clear. Our party stand is absolutely clear. We are zero tolerance to any corruption. If anyone found guilty of corruption, even distantly, remotely, the party will take action. The party has taken action in case of Bharatiya Janata Party. Manik Bhattacharya, I do not think belongs to that category of leader or the kind of leadership that Bharatiya Janata Party had. Despite that, we did not hesitate to take action against Bharatiya Janata Party. He is out of the party now. And if Manik Bhattacharya, in any sense, is distantly, remotely connected to the corruption or the, issue, the action will be taken against him. But I want to understand from BJP, what are they doing with their... No, but Mr. Mondo, let me ask you, let me ask you a specific question. Sir, in June, the High Court had him removed. When will the party take action, like you did with Partha Chatterjee? Party will definitely take a call as soon as there are some evidences. In case of Partha Chatterjee, we believed, again, that was our belief, that the money that were found in one of his aides' house, those were indefensible. In case of this person, we really do not know, and he was apparently cooperating with both agencies. There is an order from the Supreme Court that there cannot be any coercive action against him when CBI went to the Supreme Court. But this is not the CBI, the Enforcement Directorate, which is looking at the money laundering aspect, that has executed this arrest. But it relates to the same quote-unquote corruption cases. Okay, the money laundering is not coming out of the void. It is somehow related to that quote-unquote corruption in recruitment. So if the CBI is not arresting him, there is some kind of a protection from the Supreme Court. We really do not know why the ED has arrested him, because he was cooperating with them. He was cooperating with both agencies. So, maybe because of the fact that Shubhendu Adhikari's brother was arrested yesterday, and Shubhendu Adhikari made clearly that, I will see what... No, Mr. Mondal, are you suggesting that the BJP is behind this arrest? Are you saying that? I am not saying this. The facts are for that to see. I tell you, how many BJP leaders are being interrogated, forget about arresting, interrogated by CBI, despite the fact that there are corruption cases against them. Okay, let's get a response from Mr. Dilip Ghosh. Dilip Ghosh साहब ये कह रहे हैं कि एजेंसीज का मिसयूज हो रही है, बीजेपी के जो नेता हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन ऑपोजिशन लीडर्स पे ट्रैक डाउन होता है.
नहीं, उन्होंने कितने बीजेपी के लीडर पर कोर्ट में जाके कंप्लेंट की है? अगर कोई ऐसा है जाके कंप्लेन करे ना। अरे हमें तो जरूरत नहीं, पब्लिक कर रही है इनको, पब्लिक दौड़ा रही है इनको, और ये छुप छुप कर भाग रहे हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट गए, 4 दिन के लिए राहत मिल गया, कहीं गायब हो गए, आते नहीं है सीबीआई के सामने, क्यों? जानते हैं इनकी जेल पहुंचना है। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अनुब्रत मंडल 2 महीना से हैं जेल में, वो अभी भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनको 550 करोड़ उनका प्रॉपर्टी मिला है, उनको निष्कासित किए हैं क्या? ये भी तो एमएलए है मानिक बाबू उनका। पहले चहते ऑफिसर थे, सब मिल बांट के खाए, बाद में पार्टी में टिकट दिए तो एमएलए बने। आज वो पकड़े गए, सारे चेयरमैन थे और प्राइमरी एजुकेशन का बोर्ड का, तो सारे उन्हीं के बहुत नजदीके हैं और पार्टी के उनको लीडर बनाए, एमएलए बनाए। आज वो जब फंसे भ्रष्टाचार में तब हाथ धोना चाहते हैं उनसे। पूरा पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए ममता बनर्जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। मिस्टर मंडल, क्विक रिस्पॉन्स। ये बात का जवाब दीजिए। आप ही ने दिखाया था ना, आपके पार्टी ऑफिस से 2016 में शुभेंद्र अधिकारी पैसा ले रहे थे, दिखाया था कि नहीं दिखाया था? दिलीप साहब जी, आप अच्छे आदमी है, आप भले आदमी है, आप तो अभी साइड लाइन हो गए ना। शुभेंद्र अधिकारी जब पार्टी में आ गया, आप तो साइड लाइन हो गया, लेकिन आप ही दिखाए थे, आप भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, थे कि नहीं थे? शुभेंद्र अधिकारी पैसा ले रहे, क्या हुआ उस केस के बताइए ना आप। अरे आप भी दिखा रहे थे टीवी पर 2016 14 मार्च, डेट बोल दिया आपको, डेट बोल दिया 2016 में 15 मार्च में आपने दिखाया था आपके पार्टी ऑफिस में, आप में थे। देखिए शुभेंद्र अधिकारी पैसा ले रहे, तो आपने क्या किया? अभी शुभेंद्र अधिकारी की क्यों खूब बुला लिया आपने पार्टी में? आपका कंप्लेन है तो आप कोर्ट में जाइए ना। आपने, अरे कहिए कोर्ट, अरे साहब दिलीप साहब जी, ये कोर्ट का ही मामला है, ये कोर्ट का ही केसेस है, कोर्ट के केसेस का ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको पता नहीं है शायद? इस इन्वेस्टिगेशन में ये हो रही है कोर्ट की ऑर्डर पे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको पता नहीं है? अरे आप ही ने दिखाया था, आपको तो मैं दोहरा दे रहा हूँ, आप ही ने दिखाया था टीवी पर शुभेंद्र पैसा ले रहा है। आप लोग अरे पहले ये बोल दीजिए, आप दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? आप ये बताइए, देश को बताइए, आप पैसा लेने वाले शुभेंद्र अधिकारी को दिखाए थे कि नहीं दिए थे आपके ऑफिस में? अरे उसको लेके क्यों नहीं कोर्ट जाते आप मीडिया? अरे कोर्ट की ऑर्डर पे चल रहे हैं भाई साहब, कोर्ट का ऑर्डर पे चल रहे हैं सीधे इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मेरा बात का जवाब दीजिए, आप दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? पैसा ले रहे हैं। Gentlemen, let's leave it at that for the moment. Dilip Ghosh, Manojit Mandal, thank you for speaking to Times Now.